हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन एस इंग्लिश अकेडमी। गाइज दिस इज द सेकेंड पार्ट। एक्चुअली वो वीडियो मेरा जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इंटरप्ट हो गया था, दैट्स वाई आई नीड टू पार्ट सेकेंड टू अपलोड नाउ इन दिस वीडियो। मैं उसी को कंटिन्यूस करने वाली हूँ वेयर आई डिस्कस अबाउट दी 20 टॉप नॉवेल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी फ्रॉम दी वर्ल्ड लिटरेचर। तो 11 नंबर 10 मैंने उसमें डिस्कस कर लिया था एंड नाउ दिस इज द 11 नंबर ऑफ world literature's novel that appear frequently in your examination. Now please revise with me. Madame Bovary, 1857, written by Gustave Flaubert and associated with French literature. Now what is in this novel? This is a realistic novel about romantic disillusionment and the constant of marriage. Now next, number 12, we have Great Expectation. This is by Charles Dickens, published in the year 1861 एंड दिस इज एसोसिएशन है आपके चार्ल्स डिकेन का इंग्लैंड से. दिस इज अबाउट अ कॉमिक ऑफ एज नॉवल ऑन एम्बिशन, सोशल क्लास एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ द नंबर 13 वी हैव द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. दिस इज 1890 पब्लिकेशन एंड रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, एसोसिएटेड है आपके आयरलैंड. Right now this is gothic novel where explore aesthetic, morality and hedonism. Right now the next we have Heart of Darkness. This is 1899 publication written by Joseph Conrad, associated Poland. Novel number 14 we have Heart of Darkness. This published 1899, written by Joseph Conrad, association Poland, England. Right now this novel is about a critic of colonialism, morality and the darkness within humanity. Now the number 15 we have Metamorphosis. This is novella published 1915, written by Franz Kafka. Most important, associated है आपके Franz Kafka, Austria Hungary. Right now this is about an absurdist novella about alienation, transformation and existential dread. Now the number second we have Ulysses, 1922 publication by James Joyce. Please keep in your mind James Joyce, associated with Ireland. Now this is about a modernist masterpiece using stream of consciousness technique to depict a single day in Dublin. Now the number 17 we have The Trial. This published 1925, written by Franz Kafka. Again a surreal novel है आपकी about bureaucratic operations and existential anxiety. Now the number 18 we have To the Lighthouse, 1927, Virginia Woolf, England. Now this is about a modernist novel where explore memory, time and the subjective nature of reality. Now the number 19 we have The Stranger, 1942, by Albert Camus, France, Algeria, associated. A key existential novel है about absurdist detachment and fate. Now the 20 number and the last one we have from the world literature top novels, 100 Years of Solitude. This is 1967 publication, written by Gabriel Garcia Marquez, associated with magical realism and she associated है कोलंबिया जो आपका साउथ अमेरिका में है. Right now this is a magical realist novel about the rise and fall of family and Latin American history. Friends, now I'm going to give you top 50 Indian English works for UGC NET English literature. Last revision or final revision I'm just going to give you. Now please mug up with me. First we have Raja Mohan's Wife, 1864, Bankim Chandra Chatterjee, first Indian novel that was considered. Now Meenakshi's Letter, 1895, by Toru Dutt, early Indian English poetry collection. Now the Indian English lyric, 1901, मनमोहन घोष, अर्ली इंडियन इंग्लिश पोएट्री में से एक है. नाउ नॉवेल्स एंड फिक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव कांथापुरा, रिपीटेड मैनी टाइम, 1938 पब्लिकेशन बाय राजा राव, बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स नैरेटिव टेक्निक. अनटचेबल 1935, मुल्क राजानंद, कास्ट सिस्टम दलित लिटरेचर एसोसिएशन. कुली 1936, मुल्क राजानंद, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर क्लास. द गाइड 1958, R.K. Narayan, Spiritual versus Material Life, Irony in Characterization. Now Swami and Friends, 1935, by R.K. Narayan, coming of age novel in Malgudi setting. And Train to Pakistan, 1956, by Khushwant Singh,
Partition, communal violence based. Now a band in Gangas 1964, Manohar Malgonkar, most repeated आपके Indian English writer है. Now please keep in your mind and just mug up the work in chronology manner of Manohar Malgonkar if you not yet. Now this is partition narrative parallel to history. Number 11 we have A House for Mr. Baswas 1961, V.S. Naipaul, Diaspora, Post-Colonial Struggle it is. Midnight's Children 1981, example of chutneyfication as well, Magical Realism by Salman Rushdie, Magical Realism, Allegory of Indian Independence. Now The Shame 1983 by Salman Rushdie. This is Pakistani history in which explore like satire, post-colonial themes. Now The Shadow Lines 1988 by Amitabh Ghosh. Amitabh Ghosh, one of the most important Indian English writer among the Raja Rao, Mulk Rajanand और R.K. Narayan like खुशवंत सिंह एंड मनोहर मालगोनकर. इसी तरह से आपको अमिताभ घोष को भी और इनके वर्क्स को भी क्रोनोलॉजी में देखना ही देखना है इफ़ यू नॉट येट. ओके, नाउ एनवायरमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड सुंदरबंस पर बेस्ड है इनका ये नॉवल. Now friends, number 16 Sea of Poppies 2008 again by Amitabh Ghosh. Opium Wars है, colonial history, right? That Long Silence 1988 by the Shashi Deshpande. Feminism, gender role in Indian society. Now The God of Small Things 1997 Arundhati Roy. Caste, gender, post colonial trauma पर based है. Now next we have The Inheritance of Loss 2006 by Kiran Desai, the daughter of Anita Desai. This is about migration, identity crisis and post colonialism. Now The White Tiger 2008 publication by Arvind Adiga. Social mobility, corruption, critic of class division. Now most important drama and plays from the Indian English literature selected from the PYQs. First we have Tughlaq 1964 by Girish Karnad. Political allegory, historical drama on Muhammad bin Tughlaq, right? Hai Vandana 1972 Girish Karnad. Now please keep in your mind and be prepared the work in chronology manner or the plays written by Girish Karnad in chronology manner, because this also can be asked you in your examination. Now Hai Vandana is about Indian mythology, identity crisis and modernist theme. Now Nag Mandala, Hai Vandana and Nag Mandala, don't confuse between the both H and N. Now 72 and this is 1988. Same year Can the Subaltern Speak published by Spivak. Okay, now this is Girish Karnad. Folklore, women's operation, magic realism. Silence the Code is in Session 1967 by Vijay Tendulkar. Social hypocrisy, women's rights, justice and system. और आपका next we have Ghashirao Kotwal. Now 1972 Vijay Tendulkar, satirical play है on power and corruption. Final Solution 1993 by Mahesh Dattani, most important playwright of Indian English writer. Now you will have to keep in your mind the plays written by Mahesh Dattani. Communal violence पर based है, modern Indian identity as well. Tara 1919 Mahesh Dattani's gender discrimination, societal biases based theme पर है आपका तारा. Most important we have studied in our masters. Now Where's There Is a Will 1988 Mahesh Dattani, family dynamics है. Now I'm going to give you some poetries from the Indian English literature that you will have to mug up before your examination. Now first we have Gitanjali 1913 Rabindranath Tagore, spiritual mysticism, Nobel Prize winning work है. Now The Golden Threshold 1905 by Sarojini Naidu, romantic and nationalist theme पर based है. Song of Radha 1913 by Sarojini Naidu, already have been asked in your examination in chronology question. Spirituality, devotion, lyrical poetry based है. Now The Temple 1921 again by Shri Aurobindo. Shri Aurobindo most important poetist हैं आपकी Indian English writer की Indian English literature में. Spiritual philosophy, metaphysical poetry है. Now जहांगीर्स वर्ल्ड 1976 A.K. रामानुज, folklore culture theme पर based है. The Striders 1966 the poetry collection by A.K. Ramanujan, imaginary linguistic innovation in poetry. Now collected poems 1952 to 85 by Nissim Ezekiel, irony, Indianness in English poetry. Now Unfinished Man 1960 Nissim Ezekiel. And relations again Jayanta Mahapatra 1972, ये भी इनका collection है. Now The Waiting for Masiha, this is by Arun Kolatkar, postmodernist theme in Indian poetry. Now some essays and non-fiction based on Indian English literature. The Discovery of India 1964, Jawaharlal Nehru, Indian civilization, nationalism based. Hind Swaraj, Mahatma Gandhi 1909.
Now, annihilation of caste 1936 B.R. Ambedkar, most important, Dalit literature may be studied him. Caste operation and social reform, the father of Dalit literature, you can say. India's wandering civilization 1976 V.S. Naipaul, post colonial critic है of India's history पर. Imaginary homelands, now this is 1991 Salman Rushdie, Diasporic identity, post colonialism. Now the culture and imperialism, this is 1993 Edward Said, influence of colonialism on literature, though not Indian but important in Indian literary criticism. राइट इंडियन नहीं है लेकिन इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर फ्रॉम द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. नाउ फर्स्ट वी हैव Hullabaloo in the Goa Orchid 1998 by Kiran Desai, satire on Indian superstitions, modern identity. Now Serious Man 2010 Manu Joseph, Dalit struggles, caste based discrimination in modern India. Now Lowland 2013 by Jhumpa Lahiri, Next Slide मूवमेंट फैमिली ट्रोमा इंडियन डायस्पोरा पर बेस्ड है. नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 बाय अरुंधति रॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स. नाउ द टॉम्ब ऑफ सैंड, दिस इज 221 गीतांजलि श्री, written by, this is based on partition, memory, identity, won international Booker Prize. Burned Shadows 2009 Kamila Shamiz, this is a partition trauma, war thought, and she's Pakistani but relevant to Indian literature studies. Right now I'm giving you some important more things for your revision point of view, final revision I'm just going to give you. Now friends, let's discuss chronological list of major works by renowned author from world literature. Right, this is important क्योंकि यहाँ मैं आपको chronology भी बताने वाली हूँ वर्ल्ड लिटरेचर में जितने आपके renowned राइटर्स हैं. सो फर्स्ट वी हैव विलियम शेक्सपियर, मेजर वर्क्स इन chronology, नॉट ऑल मेजर वर्क्स आई इंक्लूड. टिटस एंड्रोनिकस, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ओनली आई इंक्लूडेड दैट वन. Andronicus, this is 1590 to 1591. This is a tragedy about a Roman general who seeks revenge actually on those who have wronged him, or featuring violence, betrayal and themes of revenge and justice. Now next we have A Midnight's Dream. This is 1595 to 1906. This is some about a romantic comedy filled with magical happenings and mistaken identities and love entanglement set in an enchanted forest. Right now next we have Romeo and Juliet. Now this is one of the most famous love stories about two star-crossed lovers whose death ultimately and the feud between their families. जो उनके families में dispute चल रहा था, उनकी death से वो feud जो dispute था it finished. Now Hamlet, we have a tragedy about Prince Hamlet's quest for revenge against his uncle who has murdered Hamlet's father and take the throne. Right now the Macbeth we have next one. This is a great tragedy written by William Shakespeare along with Hamlet, a tragedy about the rise and fall of Macbeth, a Scottish general who, driven by ambition and the prophecy of witches, murders to become king. How many witches we have? 3. Right, next we have King Lear number 6, a tragic play about King Lear's descent into madness after he divides his kingdom among his daughters. So किस तरीके से just because of the kingdom जो daughters थी आपस में they fight to each other. I just don't talk about the जो उनकी loyal one daughter थी. Right, रीगन नहीं था उसका नाम. Please comment me. Okay, now leading to betrayal and disaster. Now the next we have The Tempest. This is about a romance. Prospero, exiled Duke of Milan, who uses magic to restore his daughter to power and seek revenge on those who wronged him. Right now I'm going to give you chronology of Fyodor Dostoevsky, most important Russian writer है. Major works we have Poor Folk. Right, and that was 1846 publication. This is a novel actually about the hardship faced by poor in St. Petersburg, focusing on the lives of two characters who share a relationship through letters. Now The Double 1846, Crime and Punishment 1866, most important thriller, psychological thriller है ये, and एग्जाम में आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द इडियट 1869 एंड द ब्रदर कमार्जो. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1880 पब्लिकेशन.
Now let's check the work chronology. Another Russian writer, Leo Tolstoy, major works like war. First we have War and Peace, 1869, Anna Karenina, 1877, The Death of Ivan Ilyich, this is 1886, and the Resurrection, 1899. Right now, I'm going to give you facts about the Anna Karenina. This is a tragic novel about the affair between Anna Karenina and Count Vronsky, set against the backdrop of Russian society's moral expectation and class divisions. Here I'm going to give you some works written by Homer, major work in chronology. So first we have Iliad, that was around 8th BC. Right, an epic poem here that details the events of the Trojan War, focusing on the wrath of Achilles and its devastating effects on the Greek and Trojan warriors. Now the next we have Odyssey. अभी आपसे इतना ही पूछ लेंगे कि Odyssey and Iliad written by, so आप इतना ध्यान रखिएगा, by Homer. Right, now this is an epic poem about the adventures of Odysseus as he attempts to returns home from the Trojan War. जब वो Trojan War से he returned to home, this is about the Odyssey. Okay, now I'm going to give you some important works by Virgil, major works in chronology that you have to prepare for your exam point of view. Right, so first we have Aeneid. Now let's discuss about the Gabriel Garcia Marquez major works in chronology. Now 100 Years of Solitude, 1967, most asked repeated text actually by Gabriel Garcia Marquez, and this is a landmark work of magical realism. This novel chronicles the Budia family in the fictional town of Macondo, weaving themes of love, death, and fate. Love in the Time of Cholera, 1985, and The Chronicle of a Death of Foretold. These all are major. And next I'm going to give you one and most important Franz Kafka major work in chronology, Metamorphosis. You will have to study in detailed manner every idea of this novella. Now this is the novella, actually a novella about George Samsa, the protagonist of the novella, who wakes up one morning and to find himself transformed into a giant insect like big cockroach, exploring theme of alienation, family, and identity. Now the next we have The Trial, 1925. This is a novel about Joseph K, the protagonist, a man who is arrested, put on trial for an unnamed crime. एक ऐसा क्राइम जो उसने कभी नहीं किया, उसके लिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है. सिंबलाइज किया जा रहा है यहाँ पे absurdity of bureaucracy. Now the Castle we have 1926, a novel about a land surveyor named, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रगल कर रहा होता है gain access to the mysterious castle that governs the village, representing the alienation of the individual in society. Now let's discuss the major works in chronology by James Joyce. Major, right? So first we have Dubliners, 1914. This Dubliners about a collection of short stories जो depict कर रहा है the lives of ordinary Dubliners, offering a portrait of early 20th century Irish society. Now the next we have A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916, a semi-autobiographical novel that follow the early life of Stephen Dedalus, Joyce's alter ego, exploring themes of identity, religion, and artistic freedom. Now the Ulysses, 1922, a modernist novel that parallel Homer's Odyssey. होमर की ओडेसी का अगर मैं मॉडर्न वर्जन बोलूँ तो वी हैव यूलिसिस, राइट, सेट इन सिंगल डे इन डबलिन एंड रिवॉल्विंग अराउंड द थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम. नाउ प्लीज कीप इन योर माइंड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर वर्क्स रिटन बाय, वी हैव डन विद द गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, अल्बर्ट कैम्यूज, राइट, अल्बर्ट कैम्यूज associated with absurdist. Okay, now work chronology, Stranger, Myth of Sisyphus, Plug. Now Stranger, a novel about mere salt, an emotionally indifferent man. एक indifferent man होता है, this is the protagonist, now who becomes involved in a murder trial, now reflecting Camus' philosophy of the absurd. Now Myth of Sisyphus, 1942, an essay that introduced Camus' philosophy of the absurd, illustrating the human search for meaning in an indifferent universe. Now The Plague, 1947, a novel that tells the story of a town struck by a deadly plague, exploring human suffering, solidarity, and the philosophical implication of existentialism. Now guys, let's look the list from the major British writers, British literature. Major जो आपको at any cost बिल्कुल भी
छोड़ने नहीं हैं, राइट। नाउ फर्स्ट वी हैव विलियम शेक्सपियर, इनका हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, ये सभी आपने देख के जाने हैं। नाउ द नेक्स्ट वी हैव जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, Paradise Regained, Areopagitica, Lycidas. These all are important. Now next we have Geoffrey Chaucer and the key text Canterbury Tales, the Book of Duchess, Troilus and Cressida, foundational figure in English literature. आपको ये देख के जाना है. Now Charles Dickens novel, most important इनके key works like Great Expectation, Oliver Twist, David Copperfield, A Tale of Two Cities. इन्हें आपने छोड़ना नहीं है, करके जाना ही जाना है. Now William Wordsworth we have romantic poet from the British literature, lines composed a few miles above Tintinnabad, the prelude, first wandered lonely as a cloud, odd intimations of immortality. These all key works you will have to just prepare. Now S.T. Coleridge, S.T. Coleridge का The Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan and Biographia Literaria, just mug up. John Keats, Ode to the Nightingale, Grecian and Endymion, The Eve of St. Agnes. You will have to prepare. Now George Eliot, pseudonym Mary Ann Ivan, ये pseudonym है, this is the real name. Middlemarch, Silas Marner, The Mill on the Floss, just mug up. Thomas Hardy's major novels, Tess of the Urberville, 1891 है ना, and Jude the Obscure, 1895, Far from the Madding Crowd, I don't know exactly the year. Okay, now next we have Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando and A Room of One's Own, right? आपको करने ही करने हैं. T.S. Eliot, The Wasteland and The Love Song of J. Alfred Prufrock, I think 1916, I'm not sure about it. Sorry, and The Hollow Man. These और 4 quatrains देख के जाना. जोसेफ कॉनरेड का Heart of Darkness, लॉर्ड जिव और नोस्ट्रोमो. देन E.M. फॉस्टर, A Passage to India, हार्वर्ड एंड और रूम विद अ व्यू. ठीक है, ये सभी देख के जाना है. नेक्स्ट W.B. येट्स का सेकेंड कमिंग, टावर और द वेडिंग स्टेयर, सेलिंग टू बाइजेंटियम. D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव और लेडी चैटरलेज लवर, है ना. नेक्स्ट वी हैव अल्डस हक्सले, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड द डोर्स ऑफ द परसेप्शन. जेम्स जॉयस का भी मैंने पीछे आपको डिस्कस कर दिया अच्छे से. नाउ प्लीज यूलिसिस 1922, 1916 एंड डब्लिनर्स. ओके, नेक्स्ट G.B. शाह, पिगमेलियन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन. इंपॉर्टेंट हैरोल्ड पिंटर का आपको द बर्थडे पार्टी, होम कमिंग एंड केयर टेकर देख के जाना है. जीन राइस का वाइट सरगासोसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. एंड दिस इज ऑफन कवर्ड इन पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट लिटरेचर कॉन्टेक्स्ट से आपको पूछा जाता है. बर्था मैसन का जो आपका कैरेक्टर था, अ मैड वुमन ऑन द अटैक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको रियूज़ किया गया है, राइट. Apart from this, Christopher Marlowe, Dr. Foster, 1604, Ben Jonson, comedy Volpone, Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Importance of Being Earnest, E.E. Houseman, Shropshire Lad, and the T.S. Eliot का 19 Wasteland तो देख के जाना ही जाना है. ग्राहम ग्रीन का द पावर एंड द ग्लोरी और बटलर का द टावर. दिस इज द पोएट्री कलेक्शन जो आपने देख कर जाना ही जाना है. नाउ आई हैव डन विद ऑल दी थिंग्स दैट आई रियली वॉन्टेड टू मैंशन विद यू ऑल. सो फ्रेंड्स, चेक सम क्वेश्चन जो आपसे क्रोनोलॉजी में पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली, लाइक कांतापुरा, अनटचेबल गाइड, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1938, 1935, 1958 and 1997. नाउ सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर. नेक्स्ट दे कैन आस्क यू R.K. नारायण, कमला दास, यू नो ईयर ऑफ बर्थ 1906 R.K. नारायण, 1934 कमला दास, सलमान रश्दी 1947 और चेतन भगत 1974. Now you will have to set them in chronology order. Now some arrangement of text or novels in chronology like Midnight's Children 1981, Inheritance of Laws 2006 by Kiran Desai, Suitable Boy 1993 or White Tiger 2008 by Arvind Adiga. Now again you will have to arrange Summer in Calcutta 1965, Jejuri 1976, Striders 1966 or Necklace of Skulls 1991, sorry. ठीक है. Now arrange some plays like Tughlaq 1971, Dance Like a Man 1989 by Mahesh Dattani, Final Solution 1993 again Mahesh Dattani, Harvest 1997. Now here some diasporic writer. First we have Salman Rushdie, Jhumpa Lahiri, V.S. Naipaul, Bharti Mukherjee, Aga Shahid Ali, Chitra Banerjee, Amitabh Ghosh, Kiran Desai, Meena Alexander, Rohinton Mistry, Anita Rao Badami, Sujata Bhatt, Padma Vibhathan और M.G.
वसंत जी, दीज आर डायस्पोरिक राइटर. यहाँ से आपको एक सेपरेट क्वेश्चन मिल जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस की थीम्स दे डिस्कस इंडियन डायस्पोरिक जो आपके राइटर हैं वो अपनी राइटिंग्स में जो की थीम्स एक्सप्लोर करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस. एक तो डिस्प्लेसमेंट की ये बात करते हैं. सेकेंड ही दे टॉक अबाउट द कल्चरल हाइब्रिडिटी, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, होम एंड बिलोंगिंग्स, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जनरेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जेंडर एंड डायस्पोरा. दीज आर द मेजर थीम्स दे टॉक अबाउट. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ इन फ्रंट ऑफ दिस लिखा है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंग इन ईदर होमलैंड और अडॉप्टेड लैंड. राइट, बीच में फंसे हैं, ना तो वहाँ के ना यहाँ के. जैसे एक विमेन होती है ना, एक गर्ल होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो ना तो प्रॉपर ही अपने इन लॉज के हाउस की हो जाती है और ना ही प्रॉपर वो अपने पेरेंट हाउस की होती है. सो दिस इज एक्जैक्टली सूट विद द डायस्पोरिक राइटर्स. राइट, here I'm going to discuss some important question from the diasporic writing, like interpreter of melodies deals primarily with which theme. So answer we have exile and cultural identity. Now the second question, who among the following is a diasporic poet who frequently wrote about Kashmir and exile? So answer we have Aga Shahid Ali. Now the next question, match the following diasporic writer with their works, like Jhumpa Lahiri, Bharti Mukherjee, Chitra Banerjee and Rohinton Mistry. यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन मालोडी, फाइन बैलेंस, मिस्ट्रेस ऑफ स्पीशीज और जैस्मीन. तो आपका ए एसोसिएटेड है, जुम्पा लहरी एसोसिएटेड है आपके फर्स्ट से, राइट, इंटरप्रेटर मालोडी से. एंड भारती मुखर्जी आपकी एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर जैस्मीन से यानी कि 4 से. एंड चित्रा बनर्जी आपके एसोसिएटेड हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिस्ट्रेस ऑफ स्पीशीज. एंड रोहिंटम मिस्त्री आपके एसोसिएटेड हैं द फाइन बैलेंस से. राइट, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैचिंग क्वेश्चन. नाउ यू विल हैव टू मैच ऑथर, लाइक सलमान रश्दी. आपको मैच करना है इनके वर्क से, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क से. लाइक सलमान रश्दी एसोसिएटेड है आपके नॉट फाइन बैलेंस से नहीं, थर्ड वन से. थर्ड वन वी हैव द सैटेनिक वर्ड्स. राइट, थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है. नाउ भारती मुखर्जी एसोसिएटेड है जैस्मीन के साथ. एंड रोहिंतम मिस्त्री एसोसिएटेड है विच वन, फाइन बैलेंस के साथ. एंड आपके जुम्पा लहरी इंटरप्रिटेशन मालोडी के साथ. राइट, here are some more questions for practice. Swami and Friends 1935, Serpent and the Rope 1960, Midnight Children 1981 and the White Tiger Night 2008, Gitanjali 1912, Descendants 1967, Jejuri 1976, Summer in Kolkata 1965. Now you will have to arrange some important poets of Indian English notable जिनका first publication है, like तौरू दत्त. राइट, इन्होंने 1882 में फर्स्ट इनका पब्लिकेशन आया था. सरोजनी नायडू का 1905 में, कमला दास का 1965 में, एंड निसी म्यूजिकल 1952 में फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ इन. राइट, नाउ शॉर्ट स्टोरी क्रोनोलॉजिकली आपको इनको करना है, लाइक इंटरप्रीटर ऑफ मालोडीज 1999, गेम्स एट ट्विलाइट 1978, मालगुडी डेज 1943 नॉट, हाँ येस, अरेंज मैरिज 1995. दीज आर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. राइट, so friends, here I finish my video. Hope the way I discuss or revise you the concepts and the practices of different topics आपको बहुत हेल्प करेंगे. लास्ट रिवीजन में आपको सॉलिड हेल्प करने वाले हैं. प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जो मेरे से प्रॉब्लम हुआ है 2 वीडियोज़ में मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड किया है, इन दोनों ही पार्ट्स को आपको देखना है बिफोर योर एग्जामिनेशन. दिस इज़ दी सेकेंड पार्ट एंड इसका फर्स्ट पार्ट भी आपने ज़रूर से देखना है. मैं तो एक ही वीडियो बनाती, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन माई मोबाइल फ़ोन, दैट्स वाई आई हैड just make 2 videos, 2 parts मुझे बनाने पड़े. बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो.